Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about marriage. It's the marriage prediction. आपकी marriage जो है love marriage है, arranged marriage है in India. We still have arranged marriages and we all Indians are like, are we gonna get arranged marriage or are we gonna have a love marriage? What's gonna happen? We are so excited, right? So here we are doing this interesting reading for you. Let's see आपकी जो भी current energies है वो क्या कह रही है about your marriage. Is it going to be arranged or is it going to be love marriage? It's all like, see, tarot is based on the current energies. आपके present पर आपका future based, of course, आपके past life karmas, this life past karmas and present karmas shapes your future. Tarot is the current energy. So आपकी करंट एनर्जीज लव मैरिज वाली है फिर अरेंज मैरिज वाली है. सो इस चीज़ पर जो है ये टॉपिक है आज का, इस पर हम रीडिंग करेंगे और टेरो से स्पिरिट से पूछेंगे फॉर यू इज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज. सो लेट्स जस्ट हॉप राइट इनटू द रीडिंग. सो वेलकम टू दिस सेटअप. यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पायल्स जो हूँ वो यहाँ पर लगाऊंगी, बट उससे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड मे दिस नवरात्रि ब्रिंग्स many good opportunities, success, prosperity in your life and yeah I hope जैसे हम नवरात्रि में बहुत सात्विक खाना पसंद करते हैं, खाते हैं, एक रूल बनाते हैं कि नवरात्रि में हमने जो है एकदम सात्विक खाना खाना है, अनियन गार्लिक को भी टच नहीं करना है. तो उसी तरह जो ऑफ कोर्स हमारा खाना है वो हमारे थॉट्स पर इम्पैक्ट डालता है. जैसा हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं. हमारा खाना हमारे मन पर इफ़ेक्ट देता ही देता है. तो इसको अगर हम जो है थ्रू आउट जो है मतलब नवरात्रि के बाद भी थ्रू आउट ईयर अगर हम थोड़ा अपना खाना सात्विक रखें तो उससे हमारा थॉट प्रोसेस और उससे हमारी इंट्यूशन काफ़ी स्टेबल और तेज़ होगी. माइंड स्टेबल, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी. सो या आई मीन दिस इज़ a thing which I have felt in my life. So I'm born and brought up in a household where we do not eat onion and garlic. We don't. But as a child, I used to love, all the chips and all these kind of jazz, hotel, restaurant food. But as I grew, I felt that whenever I used to eat outside food, my thought process became different. It changed somehow. And when I started to eat सात्विक अन्न, जो अन्न मेरी मदर ने मेरे लिए कुक करा है, जो मैंने कुक करा, उसका कुछ और इम्पैक्ट है मेरे माइंड पर, और जो मेरे फादर ने कुक करा फूड उसका भी कुछ अलग इम्पैक्ट है. तो हमारे थॉट्स हमारे फूड में ट्रैवल करते ही करते हैं. जो खाना बना रहे हैं उसके थॉट्स फूड में ट्रैवल करेंगे और वो खाना कोई और खाएगा तो उसके मन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ये बात है. और ऐसे करते करते आई ऑल्सो बिकेम वीगन, मतलब मिल्क प्रोडक्ट बंद, उसका भी अपना इम्पैक्ट है, उसका भी अपना इफेक्ट है. सो अगेन टू बिकम वीगन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट मेरे को इतना नहीं लगा बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. So at least just try to be a vegetarian. Forget about vegan if you cannot. But try to be a vegetarian and try to not eat onion and garlic. जैसे हम नवरात्रि में सारे लोग नहीं खाते हैं, तो उसको थ्रू आउट अगर आप अपने 1 साल या एटलीस्ट कुछ मंथ अगर आप रखते हो तो यू विल सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ, इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर माइंड सेट. सो अनियन गार्लिक भी जो है हम राजसिक में ले जाते हैं, कई लोग इसको तामसिक भी मानते हैं, पर सात्विक नहीं माना जाता अनियन गार्लिक को. तभी तो जो हम खाना ऐसे पूजा में रखते हैं, पूजा में देते हैं, या हवन यज्ञ में अगर हम खाना बनाते हैं तो वो विदाउट अनियन गार्लिक होता है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि देवी देवता अनियन गार्लिक खाते ही नहीं है, वो करते ही नहीं, ये चीज़ें लेते ही नहीं है. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो गॉड गॉडेसेस है अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम भी तो सात्विक होने चाहिए ना. हम भी तो उन जैसे, हमें भी तो उन जैसा बनना चाहिए. कहते हैं ना फॉलो फादर, अपने फादर को फॉलो करो, मतलब जो उनकी सीख है, परवरिश है, उसको फॉलो करो. ऑफ कोर्स आज की डेट में पेरेंट्स ऑल्सो बिकम्स गाइड
kind of a bad influence at times, but मैं एक जनरल बात कर रही हूँ दैट वी से फॉलो फादर, मतलब फादर की टीचिंग्स पर चलो. तो यहाँ पर फादर ऑल माइटी अथॉरिटी को लेकर चले. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ वी कैन स्टॉप ईटिंग अनियन एंड गार्लिक फॉर इन नवरात्रि, then of course we can do it for at least few months, right? We can. So try to eat sattvic an. तो जैसा अन वैसा मन. All right. So if you do this thing, you will see a difference. All right. So I definitely felt a difference. That's why I'm sharing this with you. And yeah, I don't think that this is a new thing. All right. I don't think that this is a new thing. But yeah, this is a tested experiment which became my lifestyle. So of course I will suggest that you guys also do it. At least some of you will, I feel. So yeah, let's just get started with the reading. यहाँ पर आपके लिए 3 piles है हमेशा की तरह. So this is the green one is the pile number 1. The pink one, let me just show you the green crystals. So here it is, the green stone crystal. All right, this is pile number 1. Pile number 2 is this pink crystal. So this is pile number 2. I mean, ये जो crystal है इसमें ऐसे जैसे जाला ऐसा बना हुआ है, right? Pink color का. This looks very beautiful and very real. And then this is pile number 3, the orange crystal. All right, orange crystal. So pile number 1 green stone, pile number 2 pink stone, and pile number 3 the orange stone. So मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. एंड यस, वन मोर थिंग, आपको जो है 30 सेकेंड्स लेने हैं और उसमें से देखना है कि कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इट्स नॉट दैट कि आपको चूज़ करना है. जो आप ये जो स्टोन्स है इनमें से कोई स्टोन आपको अपनी तरफ बुलाएगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो वाला स्टोन आपने पिक करना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर टाइम स्टैम्प पर जाकर आप क्लिक करो, अपनी रीडिंग देखो, सुनो. सो या दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू से. सो भाई इसका स्क्रीनशॉट आ रहा है. Hello pile number 1. So this is your reading and you chose the green crystal here. And yes, let's just get started with your reading here. About your marriage, love marriage, arranged marriage. क्या यहाँ पर जो है spirit आपको guide करना चाहती है about your marriage. And of course, we are gonna cover the married life as well. Okay, we have the Emperor. Alright, कहीं ना कहीं ठानी हुई है कि मैरिज करना चाहते हो, मन बनाया हुआ है, मन कहीं ना कहीं पक्का करा हुआ है. Then I see the Fool card in reverse. Alright, यही मुझे बहुत सारे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, यही 2 कार्ड. First of all, with the Emperor, I see that you want to get married. Some of you can say that, hey, we are just watching this reading because yeah, like just for entertainment purpose, and yeah, that's it. We just want to know certain things about marriage and we are also interested in this video. That's why we clicked. So my friends, here the thing is okay, you somehow have this question in your head that मैरिज यहाँ पर होती है कि नहीं होती है. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. पहले तो होती है कि नहीं होती है. फॉरगेट अबाउट लव है, अरेंज है, नो, इट्स अबाउट होती है कि नहीं होती है. कहीं ना कहीं आप में से कुछ ये कह सकते हो कि हम तो मैरिज करना ही नहीं चाहते, बट इंटरनली यू नो एक जो मन है आपका वो ये कह रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू, आई रियली want to get married. Somehow I'm getting this message from the spirit that some of you say something but want something else from inside. It's like that. मुंह पर कुछ अंदर कुछ,
ये मैरिज से रिलेटेड आपकी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो मैरिज करना, बट शायद यू आर लाइक आई डोंट नो एम आई मैरिज मटीरियल और नॉट, एंड या कहीं ना कहीं ये चीज़ है। एंड दिस एम्परर कार्ड ऑल्सो शोज मी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स अबाउट योर लाइफ, यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इन सब चीज़ों में मैरिज फिट होती है कि नहीं होती, मेरे प्लान्स में मैरिज फिट होती है कि नहीं होती, बिकॉज आई हैव प्लान्स फॉर माई लाइफ। कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रैटेजाइज, काफ़ी प्लान करी अपनी लाइफ की ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो बट कहीं ना कहीं मैरिज अभी आपने प्लान शायद नहीं करी, कन्फ्यूज हो मैरिज को लेकर, ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है। बट येस, मैरिज के आप चाहते हो एक यूनियनशिप, आप चाहते हो एक पार्टनरशिप, ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली मैं यहाँ देख रही हूँ। आपको जो लॉयल्टी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, पाइल नंबर 1, बिकॉज आई सी अ डॉग हियर एंड यू कैन इवन हैव द नक्षत्र डोमिनेटिंग लाइक आर्द्रा, स्पेसिफिकली आर्द्रा, बिकॉज आर्द्रा रिप्रेजेंट्स अ फीमेल डॉग। मतलब योनि एनिमल हर नक्षत्र का होता है, तो उसी तरह आर्द्रा नक्षत्र का योनि एनिमल इज अ डॉग। सो यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब जनरल में भी डॉग्स आर वेरी लॉयल, नेचुरली दे आर वेरी लॉयल, दे आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड आई फील दैट द previous relationships, if you were in relationships before, then you would have noticed that somehow those relationships lacked in loyalty. So now you want loyalty. जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसी को ही ढूंढते हैं, वही चाहते हैं, ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर you want a partnership which will last you for a lifetime. ऐसे ही नहीं करना चाहते for time pass. You are like I want a relationship which can last me for a lifetime, and वो relationship जो है मैरिज में भी कन्वर्ट होना चाहिए, मैरिज में भी मटीरियलाइज होना चाहिए। अगर इफ आई गेट मैरिड, दैट मैरिज शुड स्टे विद मी थ्रू आउट लाइफ। इफ आई गेट मैरिड, देन आई वॉन्ट टू स्टे मैरिड। सो एक्सट्रीम लॉयल्टी इज नीडेड, एंड यू फील दैट आजकल वो नहीं मिलता है, आजकल वो नहीं मिलता है। सो that's why you have this question in your mind, but internally you know already the answer that yes, I would want to get married, I want to marry, even if I do not want to marry right now, then you're like, hey, still when I am, or when 4 or 5 years passes, then I want to get married, I see myself in marriage. So kahin na kahin wo cheez bhi hai, but yeah, you're like confused, should I get into it or should I not, should I get married or not. So वो चीज़ यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, but yes, you will marry, ये तो है, confirmation है यहाँ पर, ये emperor card शो कर रहा है, confirmed है that marriage is gonna happen for you. and yeah, loyalty की problem थी, but marriage में ये चीज़ नहीं आएगी। अगर इफ़ यू आर डाइवोर्स्ड और यू ब्रोक ऑफ, सो डोंट वरी, यहाँ पर जो है लॉयल्टी आपको ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट मैरिज में या नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी, एंड दैट रिलेशनशिप कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज, जिसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। देन आई सी द फूल कार्ड इन रिवर्स। सो आई फील दैट you are very mature here about relationship, about marriage somehow, और कहीं ना कहीं like you can be immature in life in general, but when it comes to relationship, marriage things, you're quite mature into it. You're like, I'm not here for pastime, I'm here for real deal. Because fool card जो है एक mercurious energy, एक बच्चे वाली energy को show करता है, immaturity वाली energy को show करता है, but now because it's in reverse, so it is giving me the message that you are very mature in this kind of sense. रिलेशनशिप वाली सेंस में, मैरिज वाली सेंस में, सो यू आर वेरी मेच्योर, एंड आई फील दैट इट इज़ लाइक जब आपको अपनी लाइफ में राइट पार्टनर मिलता है, चाहे वो अरेंज मैरिज में मिले, चाहे वो लव मैरिज में मिले, आप वो मैरिज कर लोगे। आई मीन ये यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि दिस कैन बी अरेंज्ड ऑल्सो, दिस कैन बी लव ऑल्सो, इट विल गो बोथ वेज हियर। समहाउ इट्स अबाउट that right partner, and yes, of course, for some of you, I do feel that this is a love marriage. You will know this person already, और उसके बाद ही आप इस पर्सन से मैरिज करोगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने लाइफ के प्लान्स बताओगे, दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, एंड दिस इज़ माई लाइफ प्लान। आपके क्या प्लान्स है अपनी लाइफ को लेकर। तो एक ये अरेंज मैरिज में भी चीज़ आप एक दूसरे से कन्वर्सेट कर सकते हो, ये लव मैरिज भी हो सकती है, बट द थिंग इज यू विल ट्राई टू नो अदर पर्सन्स विशेस, डिज़ायर, ड्रीम्स,
सो एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, उसी के बाद ही यहाँ पर मैरिज होगी, एक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही यहाँ पर मैरिज होगी. एट टाइम्स अरेंज मैरिज में हमें वो वक्त नहीं मिलता है अपने पर्सन को थोड़ा जानने का, तो मोर सो एक लव मैरिज की तरफ ज़्यादा यहाँ पर जा रहा है. बट अगेन इट कैन बी अरेंज्ड एज वेल. So but yeah, you will know this, I mean you will try to know this person and then only you're gonna say yes. So this can go actually both ways. More so I'm getting the message of love here, love marriage का मुझे यहाँ पर ज़्यादा मैसेज मिल रहा है स्पिरिट से, और बड़ा एक मेच्योर वे से आप यहाँ पर डील करते हुए नज़र आ रहे हो, मेच्योरिटी के साथ. I do not feel that you will say that or you would want to have butterflies in the stomach. I don't feel that. Like, of course you will want to fall in love with this person, but more than love, security, stability, financial security, stability, and longevity of marriage will matter to you. And I feel that you can have Venus and Saturn conjunct, or Saturn is aspecting your Venus. Venus is love marriage relationship. Saturn represents old, experienced, wise, प्रैक्टिकल. सो वो ओल्ड वाइज एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एनर्जी मैरिज में आ रही है आपके लिए. एंड फॉर सम ऑफ यू मैरिज इज ऑल्सो डीले बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स डीले. वीनस इज मैरिज, सो डीले इन मैरिज कैन इवन हैपन. बट या इफ यू गेट मैरिड यू आर गोना स्टे मैरिड. ये वीनस और सैटर्न जो है अगर कंजंक्ट है म्यूचुअल एस्पेक्ट में, या फिर सैटर्न ही वीनस को एस्पेक्ट करे, तो प्रॉमिस करता है सैटर्न दैट हे I can delay the marriage, I will not deny the marriage, and the marriage will be very long, lifelong, committed. So वो energies यहाँ पर है serious way में. एक butterflies in the stomach वो अच्छी बात है, feel होता है अगर आपको, but more so this is a marriage of convenience that hey, are you going to stay with me or not? If yes, then I'm in. If you are not going to do this, if you are not going to stay committed, then hey, I'm out of this whole situationship, relationship. So that you're very clear about these things, and it's good. I'm not judging you here, but yeah, like this is a good thing here. It is a good thing. So if people say that you're too practical, then yes, you are, and it is a good thing. It is a very, very good thing. So let me just get some more messages here about your marriage and married life. और अगर आपके कुछ ओके आई सी वॉल्केनो, वॉलेटिलिटी, आपके पर्सन के बारे में भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी लेंगे. आई फील दैट योर पर्सन इज गोना बी लाइक दिस एम्परर. यू एंड योर स्पाउस आर एम्परर एंड एम्प्रेस. आई फील दिस. both are going to be very practical. You can get a spouse who's actually older than you, maturer than you. कहीं ना कहीं एज में बड़े हो सकते हैं आपके स्पाउस, या फिर मेंटालिटी में काफ़ी वाइज मैच्योर हो सकता है. ये इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं. सो या एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन कैन हैव अ बर्न्ड लुक. मतलब एक रेडिश बर्न कम्प्लेक्शन इस पर्सन का हो सकता है. सडनली आई जस्ट गॉट दिस मैसेज from the spirit with this volcano card, and then I see dragonfly emergence. I feel that suddenly a person आपकी life में pop up होंगे. I feel this. And okay, let me just pull some more cards from some other deck, right? Some more information, and I feel that you guys are gonna grow together, grow old together here. Again, longevity of marriage is there. And you and your spouse in the relationship, in the marriage, are going to keep on evolving. Nothing is really constant in marriage. What is constant in your marriage is actually change. और कहीं ना कहीं एक जो है अड़ते नहीं हो एक दूसरे की बात पर, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करते हो. ओके, ये दो कार्ड यहाँ पर आ गए हैं. I see passion and empowerment. So of course there's a lot of passion with this volcano card as well. Passion तो यहाँ पर पूरा है, भरपूर है, और एक दूसरे को समझने की चाह है, और दोनों प्रैक्टिकल लोग हो. तो फिर अगेन यहाँ पर जो है इमेच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी वाली एनर्जी यहाँ पर है.
एंड यू गाइज बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. अगर लव ना भी हो ना रिलेशनशिप में, बट वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड हो एक दूसरे के लिए, और एक ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस हो एक दूसरे के लिए, तो वो मैरिज ज़रूर चलती है. और दिस इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वेयर बोथ ऑफ you guys are understanding marriage and the seriousness of marriage. Of course you guys will have fun, there is a lot of passion, and yeah, that's understanding and passion is there. So love जो है वो secondary है, luxury है. Understanding becomes great. Understanding is important and that is here in your marriage. And I see that empowerment का कार्ड यहाँ पर है. आप अपने स्पाउस को जो हो हमेशा मोटिवेट करते रहोगे, आपको आपके स्पाउस हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, एक कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाता है. कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे, आप अपने स्पाउस को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे का आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. Even if someday you're not looking good or your partner is not looking good, you kind of cheer them up. And यही बात होती है, अगर आपने कपड़े अच्छे भी पहने ना हो पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी फिजिकल अपीयरेंस को ऑल्टर कर देगा. और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन लाइफ, इन सोसाइटी. अगर यू आर कॉन्फिडेंट इन समथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन, यू आर अ पर्सनैलिटी जिसको लोग देखते हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. यू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. एंड आई फील दैट बोथ ऑफ यू गाइज आर पावर कपल. बोथ ऑफ यू आर पावर कपल एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल. ये चीज़ है यहाँ पर, दिस इज देयर, बिकॉज यहाँ वॉल्केनो और पैशन का कार्ड है. ये दोनों ही बड़े मार्सेशन कार्ड्स हैं. और जो मार्स है वो एरीज साइन रूल करता है. एरीज फर्स्ट जोडियक है, हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं. और एरीज में सन एग्जॉल्टेड होता है. सन लाइट देता है, क्लैरिटी देता है, और सन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. अग्नि को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. यहाँ पर भी अग्नि है, यहाँ पर भी पैशन में अग्नि है. मार्स इज अ फायर साइन. तो जहाँ पर भी अग्नि होती है, जहाँ पर भी जैसे बॉर्न फायर होती है, तो उस फायर की तरफ जरूर ध्यान जाता ही जाता है, हमेशा जाएगा, आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते. सो पीपल कैन नॉट, विल नॉट बी एबल टू इग्नोर यू एज अ कपल टुगेदर. एवरीवन लुक अप टू यू, दैट हाउ यू लाइक हाउ यू अंडरस्टैंड ईच अदर. एंड आप एक मतलब कपल जो हो, बड़े ही अच्छे कपल हो, और एक दूसरे को समझते हो, और लाइक यू आर वेरी अट्रैक्टिव एज अ कपल. एंड डज नॉट मैटर हाउ यू लुक, but your energies are very attractive, and that attract other people towards you. Some people can even come to you guys for relationship advice. So I see that, and passion is flowing here, passion, and a lot of sexual fire is there. And आप जो हो, आप दोनों लोग जो हो कांस्टेंट चेंज वाले लोग हो, ऐसे मतलब रिजिड लोग नहीं हो. वक्त के साथ, समय के साथ बदलना जानते हो, और जानते हो कि बदलाव कांस्टेंट है, हमें भी बदलना चाहिए समय के साथ. तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. सो दैट मेच्योरिटी इज देयर इन यू गाइज. सो and that's very beautiful. That's actually very great, and makes your relationship work out for lifelong. Oh my goodness, today my speech is okay. Now I got one more message here. I feel जैसे मैंने अभी स्पीच की बात करी, मैंने अपनी स्पीच की बात करी कि आज मुझसे जो है इतना बोला नहीं जा रहा है. somehow I am fumbling. So I feel that maybe you or your partner can fumble, but because of each other you gain confidence, and somehow your speech also become more authoritative when you get married, because you guys are constantly empowering each other. So that's there. मतलब ये चीज़ है कि आप जो हो, आपकी आफ्टर मैरिज, आपके स्पाउस की आफ्टर मैरिज, बट स्पेसिफिकली आप, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है, तो आपकी आफ्टर मैरिज जो है लाइफ ऐसी है कि जहाँ पर आपके गोल्स हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम है, आपका करियर है, आपका कर्मा है, और आपके स्पाउस आपके हमेशा साथ रहते हैं उसमें, या फिर आपके पीछे खड़े रहते हैं कि अगर आप गिरते हो तो आपको वो खड़ा करते हैं फिर से. सो योर स्पाउस इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर वर्क.
but your spouse is there in every stage of your life, and that's how he empowers you or she empowers you. So I feel these kind of energies here. Let me just pull some more cards. यहाँ पर स्पिरिट और क्या मैसेज देना चाहती है आपको आपकी मैरिज से रिलेटेड. ऑलराइट, यहाँ पर अपने आप कुछ कार्ड्स निकल आए हैं, काफ़ी सारे हैं, बट आई वॉन्ट टू रीड ऑल ऑफ देम बिकॉज आई जस्ट फील दैट ये मैसेज इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर डिस्टेंट थंडर्स का आया हुआ है, क्लियर द एयर. अगेन द थिंग इज कि ओके मैं ना आजकल न्यूज़ चैनल जो हूँ देखती हूँ अपने ग्रैंडपा के साथ, तो some news readers are very funny and I really like them. I really like to watch them. So तो एक न्यूज़ रीडर ने ये कहा था, हवा आने दो, चलो चलो हवा आने दो, like this. So clear the air, distant thunder. I feel that you need to do this in your life. You really need to do this in your life. Whatever people came in your life, जो भी लोग थे वो शायद वो इतने अच्छे नहीं थे, शायद वो आपकी लाइफ से चले भी गए हैं, पर आप कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनके बारे में सोच सोच के अभी भी अपना जो है मन खराब करते हो. तो आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, चलो चलो हवा आने दो. दिस थिंग, यू नीड टू डू दिस थिंग. एंड बिकॉज अगर आपने उन्हीं को पकड़ के रखा, उन्होंने ऐसा करा, ऐसा मेरे साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, अगर आप इन्हीं सिचुएशंस में इन्हीं थॉट्स में उलझे रहोगे तो आप अपनी लाइफ में राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, राइट पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे. एट टाइम्स ऐसा होता है लाइफ में कि आप इतने इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि एक अच्छे इंसान से भी आप बहुत बुरी तरह से जो है डील करते हो, बहुत बुरी तरीके से बातचीत करते हो, तो उस पर्सन को भी बहुत बुरा लगता है. एंड देन यू फील गिल्टी. ऑफकोर्स आपको गिल्टी कॉन्शियस भी होगा उस टाइम. तो ऐसा ना हो कि आपको अपने राइट पार्टनर मिले बट आप उनसे अच्छे से बात ना करो. And then you feel guilty conscious that, hey, this was a good person, but oh my gosh, I should not have said these things to them. So, okay, so you really need to let go of the past people. Not everyone is same, okay? You need to understand this thing. Not everyone are same. So, remember this thing. Chalo, chalo, hawa aane do. Let them go. So this is one message. And then I see navigating by the star. Follow your bliss. I mean, this card is giving me the message that horoscope matching is being done. In India, horoscope matching becomes very important. It's very important for us. Western societies में इतना नहीं होता, Indian society में ये होता है, हम horoscope ज़रूर match करते हैं. And I feel that some of you are the people who are like, hey, I'm a Taurus, so like, and my person is Libra, तो हम में compatibility है या नहीं. So पहली बात तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी की कंपैटिबिलिटी करी नहीं जा सकती है. ऑलराइट, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म एस्ट्रोलॉजी. सो स्टॉप डूइंग दैट. स्टॉप डूइंग दिस, अरे आई एम अ टॉरस एंड दैट पर्सन इज एरीज और लीब्रा, व्हाटएवर. नो, डोंट डू दिस. दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी. आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई सी पीपल डूइंग दैट अ लॉट. This is not how astrology works. It's way deeper than this. So don't do this to yourself. Don't get into these things. Just feel that, like, what kind of thoughts I have for this person. Feel that, is this person for me or not? All right, it's something like relationship or marriage is something which is about feelings, which is about can I live with this person? Can I stay with this person throughout life? That is the question you need to ask. Not about that, hey, this sign is matching or not. Horoscope matching ऐसे करी भी नहीं जाती है. No, this is not the way. So if you want to know how horoscope matching is done, the link to my website is in the description box below, so check that out. But yeah, what I want to say is that you guys are doing that. So stop doing it. Stop doing this sign matching. This is not how you do this. So you need to stop doing it, and you have to navigate by the stars, meaning that yes, get a horoscope matching done by someone. I'm not saying that get it done by me only, but by anyone if you really want to do this, because I feel that pile number 1, you guys are the people जिनके लिए horoscope matching ज़रूरी है. I feel this, जिसके लिए astrology में match होना ज़रूरी है. So अपने आप के बजाय किसी और से कराओ तो वो better रहेगा. Then I see gates of Trump. Okay, I'm not gonna say this term.
because I'm going to butcher the term, so I'm not going to say it. Success expands in your life, and I see that there is a way here, there is लाइट हेयर. यहाँ पर सन जो है निकल कर आ रहा है, शाइन करेगा अभी. डार्कनेस से जो है, डार्क टाइम से आप एक लाइट और एक दिन के समय में जा रहे हो, रात से दिन में जा रहे हो. और जो भी आपके पिछले रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत दिन रात का फ़र्क होगा आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में. जो आपका रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ, एक दिन रात का फ़र्क होगा. नॉट एवरी वन इज सेम, ऑल राइट, रिमेंबर दिस थिंग. एंड एक मैरिज के बाद एक नया ही रास्ता आप जो हो बना रहे हो, या फिर एक नए रास्ते पे चल रहे हो. जो आप प्लान कर रहे हो वो, जैसे एम्परर कार्ड है जो प्लान्स आपके बता रहे हैं. एम्परर तो ऑफ कोर्स वो प्लान्स भी है, बट साथ में आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर चल रहे हो. एक कुछ नई चीज़ें भी जो है आपके एक एजेंडा में आ सकते दैट आई, और एक गोल्स में आ सकते दैट आई वांट टू अचीव दिस आफ्टर मैरिज. कुछ गोल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ गोल्स में ऐड ऑन हो रहा है आफ्टर मैरिज. एक नए रास्ते, एक नई शुरुआत जो है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर आ रही है. 2 कार्ड यहाँ पर और हैं. अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. सो दिस कार्ड वॉन्ट्स टू गिव यू दिस, जैसे होता है ना कि हाँ आप सही रास्ते पे चल रहे हो, एक इंडिकेशन. तो ये आपको स्पिरिट इंडिकेशन देना चाहती है दैट यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ऑल राइट. इवन इफ द टेरिटरी इज अननोन, बट स्टिल यू आर ऑन द राइट पाथ, करेक्ट पाथ. सो डोंट क्वेश्चन दैट, hey, is this the right path for me or not? Don't do that. Okay, you are on the right path. You are on the destined path. आप वहीं हो जहाँ पर आपको होना चाहिए. So don't you worry. And I feel that जैसे यहाँ पर एक ठंड का, विंटर का टाइम, स्नो का टाइम नज़र आ रहा है, एक कोल्डनेस यहाँ पर नजर आ रही है. एंड आई फील, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट सैटर्न बिफोर, सो दिस कार्ड इज कनेक्टिंग टू दैट. बिकॉज सैटर्न एक कोल्ड ग्रह है, मतलब एक प्रैक्टिकल कोल्ड ग्रह है नेचर वाइज. तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि मैं ये नहीं कहूँगी बुरी बात है, बट मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूर अच्छी बात नहीं है. बैलेंस की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्राई मत हो, ऑल राइट. बी मोर वार्म एंड वेलकमिंग, इसकी आपके लिए गाइडेंस है. एक वेलकमिंग नेचर होना ज़रूरी है, ऑल राइट, हर किसी के लिए. चाहे दूसरा पर्सन जैसा भी है, आपने अपनी अच्छाई नहीं खोनी है, अपनी ज़बान गंदी नहीं करनी है, तो इस पे ध्यान देना है. तो नेक्स्ट है टेकिंग शेल्टर. द आंसर्स आर विद इन. सो जो भी आपके, जैसे मैंने शुरू में भी यही कहा था एम्परर कार्ड में भी, दैट यू ऑलरेडी नो, you already know about your marriage. कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आप मन अपने मुंह से क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं मैरिज करूँ या ना करूँ, मेरे लिए मैरिज है या नहीं है. You already know that you are destined to get married. You want to get married. The answer is within you. और जैसा ये जो रीडिंग है, ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए ही है कि कौन सी, मतलब किस टाइप से आपकी मैरिज होती है. आई फील दैट फर्स्ट यू आर गोना नो दिस पर्सन, आप you are gonna get to know this person and then only you're gonna get married. So more से एक love marriage वाला situation यहाँ नज़र आ रहा है. But at the same time I feel with this taking shelter card that someone is coming to your home and एक arranged marriage situation भी यहाँ पर हो सकते हैं. But first you will get to know this person and then only you're gonna say yes or no to this person. But yes, I feel that this person may come to your home because your parents said that ये रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, something of that sort, and the person comes to your home or you go to their home. And yeah, so एक arranged marriage वाली भी बात है. But first again you will get to know this person and then only marriage is gonna happen. ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस कुछ ही मिनटों में आप सोलमेट बन जाओगे, ऐसा नहीं है. बट पहचानोगे एक दूसरे को, सोचोगे समझोगे एक दूसरे के बारे में, फिर ही कोई डिसीजन आप लोगे और ये पर्सन कोई डिसीजन लेंगे. बट यू ऑलरेडी समहाउ ऑल्सो नो दैट दिस इज एन अरेंज मैरिज और नॉट. यू ऑलरेडी समहाउ नो द आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी द आंसर्स आर विद इन. इसकी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर. तो यू मे ऑलरेडी नो योर आंसर. Alright, so yep, this is something which is coming for you, pile number 1. And yes, that was it. This was the reading for you all. And do let me know in the comment section, what do you think about your reading, how it resonates, and yeah, do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel.
because whenever you guys subscribe, it just motivates me to do more. All right, so please subscribe to this channel, like this video reading, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the pink crystal stone here, and yes, let's just get started with your reading here. यहाँ पर आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, मतलब क्या यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं? फील दैट दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. ओके, जजमेंट. ऑलराइट, ओके, दिस इज जैसे अगर इफ़ यू आर इन मैरिजेबल एज, आई फील दैट आपने काफ़ी सारे रिश्ते ऑलरेडी देख लिए हैं, या फिर even if you're not in a marriageable age, somehow you've seen people, or you kind of know what goes in relationship and how people are. You've closely observed a lot of people, you've closely judged other people well, and yeah, we have the Hermit card here, but first this Judgment card gives me the message that you're too judgmental. You judge other people a lot, and you also feel that other people are also judging you. You feel that कि मतलब हर कोई जो है मुझे ही देख रहा है, मुझे ही जज कर रहा है, और आप भी ये चीज़ दूसरों के साथ करते हो. You do this, you judge other people. You, of course, when we are seeing you know, a person for a marriage, of course you're going to judge them, but you're too particular. All right, you're too particular, and you should not do this. And I also feel that you also judge people with their voice, and I somehow also got this message that you also judge people the way they eat, the way they sip their tea or coffee. You also judge them like that. And you can even have a pet peeve कहते हैं क्या? मतलब you get irritated or you get frustrated when people eat with open mouth. मतलब चप 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 आवाज़ आए, या फिर चाय पी या कॉफ़ी पिया तो उसकी आवाज़ आए, तो you don't like that. You don't like that, and it just makes you feel irritated. So ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए. You judge them in this sense as well. But yes, at the same time, you also judge them with what kind of a voice they have. So yeah, you are too judgmental here, and you also take care of these things. All right, if you judge other people on this basis, you also understand this thing that मेरी ये चीज़ें perfect होनी चाहिए फिर. So you also make sure that you have etiquettes. So ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. And yeah, like you also feel that जो love है या attraction है वो हो ही जाती है. मतलब if attraction होनी होती है तो पहले दिन पर ही हो जाती है, नहीं होनी होती तो नहीं होती है. You also understand this thing, and you feel that love or relationship should be free flowing. मतलब उसका अपना flow होना चाहिए. ये नहीं है कि I'm taking the relationship too slow or that person is taking the relationship too fast. तो ये too fast too slow का बिल्कुल concept नहीं मानते हो. आपको ये लगता है कि एक flow में चलती है चीज़ें, या कई बार जल्दी चल पड़ती है, कई बार slow चलता है कोई relationship. हर relationship का अपना pace है. You already know this thing, and you want a kind of a marriage जिसमें जो है मतलब maybe you're waiting for a click, or you're waiting for flow somehow in relationship or marriage, and I feel that you haven't really found your person yet. Or maybe you are in relationship, then also you feel that I haven't found the correct person, because वो एक rhythm नहीं नज़र आ रहा है, feel हो रहा है उस relationship में. Rhythm becomes very important for you in relationship or marriage. And yeah, I mean, I feel that you haven't really found the correct person. The spirit is giving me this message that you haven't really found the one yet. And the Hermit card is giving me the message that some of you are taking a break from marriage hunting, a right partner hunting. You kind of have maybe given up, or you're taking a break from it. So yeah, and I also feel that maybe a person you already know, or if you're already married,
Or like I feel that some of you are also trying to conceive and it's just not happening, so you're taking a break from that too. I just got this message, so I just had to convey this. तो यहाँ पर जो है एक आप ब्रेक ले रहे हो, एंड आई फील दैट सम ऑफ यू आर गोइंग फॉर अरेंज्ड मैरिज ओनली, एंड आई फील दैट दिस पाइल इज ऑफ अरेंज्ड मैरिज. और आप काफ़ी सारे रिश्ते ऑलरेडी देख चुके हो, एंड you're like, let me take a break, let's see what happens, what not happens, and yeah, you're like, अगर होनी होगी मैरिज तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी. तो it's like that. And yeah, but your parents somehow, or your friends, but specifically parents, of course, they are like, no, we cannot take a break, we have to find more rishta. So it's like that, they are moving on, they are going forward, they are moving forward, getting you a new rishta. So that is something which I see. And yeah, like, but your energy is coming कि मैं थक गई हूँ, अब मैं बैठ रही हूँ और मैं थोड़ा अब इस चीज़ से रेस्ट लेना चाहती हूँ, शादी मैरिज से. I want to take I want to, like, you can say to your parents that I take a chill pill, let me live my life, it's not happening right now, maybe it's not really destined right now. So it's, your energy is coming like that. And even if you're not in a marriageable age, you somehow are constantly trying to find your partner, constantly trying to find the right person in your life. And I feel that you can have a dominating Mrigasira nakshatra which occurs in Gemini, and it also occurs in Taurus. मतलब last की degrees में, Taurus की degrees में Mrigasira होता है, early degrees of Gemini उसमें Mrigasira होता है. Mrigasira is a nakshatra about a deer. A deer is always searching something. So most of the time a Mrigasira is always searching for the right partner in their life. And when they get that right partner, they get so much into love, or they fall deeply in love. And even if you don't have sun, moon, your Atmakarka planet holding the highest degree in your chart, but still Mrigasira nakshatra is going to be dominating, meaning the sign of Taurus and the sign of Gemini can be dominating. You can have grahas in those signs, or some graha can aspect these signs. But this nakshatra is very strongly working in your case, pile number 2. Always finding the right partner, always trying to get that right partner in life, always seeing that who is this person, when will I meet this person. And I also feel that you guys also constantly watch marriage prediction on YouTube. I feel this. That's why you also clicked on this reading. Simple. So yeah, you're always trying to find कि कहाँ से मुझे पता लगे, किधर से मुझे ये person मिले. So it's that desperation as well. The energy is kind of desperate. And you don't want to live your life alone. वो भी चीज़ है यहाँ पर. तभी तो you're constantly trying to find the right person in your life. And yeah, let me just pull some more cards about your marriage, about your, partner, married life, some more information. कुछ information यहाँ spirit दे तो. Okay, I think these two cards. I see dream time, I see desert, vision quest. Just मतलब ये desert का card just बहुत एक quick message यहाँ पर मिला है मुझे. That you feel कि दूर दूर तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई अच्छा person नहीं है मेरे लिए. And there is this vision quest. So this vision quest, these two terms itself gives me a message here that you are on this, like, जैसे वो कौन सा कार्टून था, Dora the Explorer. The Dora the Explorer. So that cartoon was about a girl who was exploring, right, going from one place to other and doing all sort of shenanigans. और मतलब वो अपनी एक्सप्लोर कर रही थी, तभी उसका नाम भी उस कार्टून का डोरा द एक्सप्लोरर था. सो यू आर एक्सप्लोरिंग different people or world itself, trying to find the right person. And you also have a vision for your person, like my person should be like this, like that, these qualities should be in my person, or this should be the height, this should be the weight, this should be the color of the person. So there are too many expectations, you're too particular. यहाँ पर भी judgment card में भी I was telling you the same thing, that you judge a person very
deeply and go into details. And see, no one is perfect, all right? You also know it, but you need to understand this thing. Aapko pata hai that no one is perfect, but you need to understand this. You are not really understanding this thing that no one in this world is perfect. So you have a vision about your spouse, that my spouse should have this qualities, and if they do not have this, then I'm not gonna marry them. So it's like that. And I see dream time, so it's like जैसे वो एक जोक नहीं है कि where is your partner, like someone asks you that where is your partner, and then you say they live in a different nation, and then the person who asked you first, they asked you again that what nation, which nation, and then you say imagination. So I feel that correct partner, that right partner only exists in your imagination, only exists in your dreams. You have too high expectations, too high. So you need to lower them down. All right, you have to lower them down. And yeah, I feel that you want everything. You may feel that my spouse should be serious, should be practical, but at the same time he should be very romantic, and they should have 6 abs and fitness wali body, matlab ek achhi body. But at the same time you want them to be on work all the time, you want them to earn really well. Not on work all the time, you also would want that person should give me time, but you also want them to earn money, good amount of money, what did I say, good amount of money. You want them to earn a good amount of money, but एक ही पर्सन में ये पूरा पैकेज मिलना ऐसा मुश्किल है, जो बहुत अच्छा अर्न करता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करता है. आई एम श्योर कि उनको एक्सरसाइज का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट वो अपनी बॉडी को ज़रूर मेंटेन करते होंगे. सो सेम गोज विद योर स्पाउस मे नॉट रियली हैव ए जॉन अब्राहम काइंड ऑफ बॉडी, but they are very hardworking people. I can say that with these cards. They are very hardworking people, and they want to make their dreams come true, want to make your dreams come true as well. And they, again, because this is a desert card, so I feel that this person is also very practical person, cold, dry personality. Do not really show their emotions easily. They are going to be the people who are going to be very hard to read. They are not open books. So when you meet this person, you can feel that I cannot judge this person at all, because this person is just not opening their mouth. They're just not expressing themselves. You may feel this way. And Saturn can be your Dharakarka, or Saturn can impact your 7th house of marriage, love, relationship. And Dharakarka is the planet holding the lowest degree in your chart, which represents spouse. So this can happen. And you can even, I feel, pile number 2, you can even be connected to pile number 1. If you were attracted to pile number 1, then also watch that or listen to that reading if you have time, because there also Saturnian qualities were there. So if you have time to watch or listen to that reading. So yeah, they are also Saturnian people. They can be older than you in age, or can be maturity wise, agar hum dekhe, then this person is older than you, maturer than you, experienced than you. I'm getting these messages. Let me just pull some more cards for you about your married life, about love marriage, arranged marriage, some more information. More information for pile number 2. All right, I see manifestation. Okay, you have a vision, as I've told you. You have a vision about your person, that my person should be like this, like that, and you can also say that, hey, I'm manifesting this person. So somehow your manifestation can come true. But hey, don't I really want to say this again, that lower your expectations. All right, lower your expectation. Manifesting the right person in life is not a bad thing at all. All right, you can do manifestation, and your manifestation is also coming true. Some part of it is coming true for sure, but again, lower your expectations. And yeah, something more.
And I feel that you can even have dreams about your person. I feel this as well. You can dream about this person because somehow your thoughts are constantly about marriage, about life partner these days specifically. So you may even dream of that right person in your life, manifesting that person. Or whosoever your person is, काफ़ी दूर दृष्टा ये पर्सन होने वाले, दूर की सोच के चलेंगे और काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन ही है. जैसे ये पर्सन भी एक टांग पर खड़े हो, एक पैर पर खड़े हो, इसके लिए बैलेंस चाहिए, राइट? सो दिस पर्सन इज अ पर्सन हु इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एट वर्क. मतलब बहुत बैलेंस्ड पर्सन ये होने वाले. और इस पर्सन के भी हाथ में जैसे यहाँ पर भी फ्लूट दिखाई हुई है, राइट? फ्लूट है, फ्लूट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, रिदम है, रिदम ऑफ लाइफ की अभी हम बात कर रहे थे, रिदम की बात कर रहे थे. यहाँ पर भी इट्स लाइक अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हेयर. तो दोनों ही जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है ये एयर से जो है वर्क करते हैं. फ्लूट ही यहाँ पर ज़्यादा ही नज़र आ रही है. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे एयर से बजाए जाते हैं, इस पर जो भी आपके स्पाउस है या आप खुद भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपनी लाइफ में लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, बजा सकते हो. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. स्पाउस कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू म्यूजिक. They can have some music instrument. They are very creative at the same time. They have a balanced life. They have a balanced life and they value a balanced life. Work and play का balance वो जानते हैं कि कैसे मनाना है. Work and play का balance. They are very experienced people. Very colorful people. Okay, I think this card wants... Actually, okay, these two. We have two messages. Okay, I see reconciliation and justice. All right. So of course reconciliation सीधा एक तो सीधा ही मैसेज है यहाँ पर. आप में से कुछ लोग reconcile करने वाले हो अपने पार्टनर से, जो शायद आपके एक्स हैं, शायद उनसे आपका reconciliation यहाँ पर हो सकता है. इसका मैसेज है यहाँ पर. और आप में से कुछ लोग जो है, जो रिश्ते शायद आपने पहले देखे और जिन रिश्तों के लिए शायद आपने पहले मना कर दिया हो, वो रिश्ते आपकी लाइफ में फिर से आना और कहीं ना कहीं उन रिश्तों के लिए मान जाना. आपने एक तरह से यू से येस टू द प्रीवियस रिश्ता, तो वही रिश्ता वापस आना. और दिस कैन इवन बी अ पास्ट लाइफ रिलेशन, जो मतलब पास्ट लाइफ पर्सन इज कमिंग एज योर स्पाउस. दैट कैन हैपन हियर बिकॉज आई एम गेटिंग दीज मैसेजेस. एंड there is this, you know, strong connection between you two for sure, and both kind of will trust each other a lot. I feel this is also giving me the message that trust your partner. All right, trust your partner. They want the best for you, so remember this thing. And then I see the justice. The justice is definitely going to be served. Do not worry if you feel that justice is not being served, life is not fair. Don't worry, justice is going to be served to you. Don't worry about that. एंड आई फील दैट जैसे यहाँ पर स्केल्स बने हुए हैं, तो जस्टिस और ये स्केल्स जो है लीब्रा साइन को शो करते हैं. सो योर पर्सन कैन हैव सन, मून, राइजिंग और लग्ना in the sign of Libra only. And Libra is a very unbalanced sign because Libra shows relationship. And have you ever seen someone in a relationship or in a marriage who says that, hey, I'm very happy in my marriage, I'm happily married? No, that doesn't happen. We are always balancing our relationship with our spouse, always balancing our relationship with our partner. We always do that. We always are balancing relationship in our life, romantic relationship in our life. So of course, not everything is in rhythm here. You like everything balanced. Your person likes everything in balance. That's why you and your partner will always try to balance the relationship out. You and your partner are always going to try to make things work out between you two. If you are busy, if your partner is busy, then you two kind of will make time for each other. मतलब एक conscious effort आप दोनों का यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है इस मैरिज को
चलाने के लिए, लॉन्जिटिविटी ऑफ मैरिज के लिए, दोनों यहाँ पर एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब एक सोलमेट कनेक्शन है कि भाई बात भी नहीं करी तो भी एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। नो, यहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, आप ओवर शेयर करोगे अपने पर्सन के साथ और हमेशा बैलेंस करते रहोगे मैरिज को, रिलेशनशिप को, वर्क लाइफ का, वर्क एंड प्ले का बैलेंस आप करते रहोगे। आपके स्पाउस को ये आदत होगी कि वर्क और प्ले का बैलेंस कैसे करें। मे बी यू आर गोना अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वर्क और प्ले का बैलेंस कैसे लाइफ में लेकर आए, क्योंकि आपके स्पाउस को वो चीज़ ऑलरेडी आती है। हर चीज़ को बैलेंस करके कैसे चले ये आपको आपके स्पाउस सिखाते हैं और ये आप सीखते हो, ये चीज़ आप सीखोगे मैरिज में। एंड या अभी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। लेट्स सी व्हाट मोर इन्फो इज कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। और यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए? ऑलरेडी वी हैव ओके, वी हैव 2 कार्ड्स हियर। सो सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सी यहाँ पर कंट्रोल, आई फील दैट यू आर काइंड ऑफ पाइल नंबर 2, you guys are control freaks. You want control in your life. You want to control your life. You want to control every aspect of your life, whether it's relationship, whether it's career. And the thing is, the spirit wants to guide you that, you know, some things cannot be really controlled, all right? You need to release this energy of yours that I want to take charge, I want to take charge. You need to release this thing. You have to surrender to the almighty authority and you have to surrender to time, you know, you have to surrender to time. मतलब हर चीज़ का अपना समय होता है, तो जब समय आएगा तो वो पर्सन भी आपको मिल जाएंगे या वो कोई चीज़ आपको मिल जाएगी जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो अपनी लाइफ में। समय के साथ वो मिल जाती है और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी ने कुछ पाया नहीं है। तो ये चीज़, ये फॉर्मूला आप पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है, सरेंडर टू द ऑलमाइटी अथॉरिटी, सरेंडर टू योर लाइफ्स जर्नी। जिस चीज़ ने, जिस पर्सन ने आपके पास जिस समय पर आना होगा वो आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, मतलब कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं। ऑफ कोर्स वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी टू कंट्रोल एवरीथिंग, कि आज का मेरा ये प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो क्या होता है, उदासी आती है, सैडनेस आती है, मलंकलिक हम फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ को आपने अपनी लाइफ से हटाना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में नहीं, बट ओवरऑल लाइफ में ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, और ये आपके लिए मैसेज है। देन यहाँ पर चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। सो यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है मैरिज में, या ये पर्सन तो मेरे पास आ ही नहीं सकते हैं, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप बहुत यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्पिरिट आपको ये कह रही है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑलराइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे, हम कहते हैं, कहावत है, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर इसी चीज़ को फिर से स्पिरिट आपको रिमाइंड करना चाहती है, कराना चाहती है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड अगेन आप एक पाथ चूज करो और उस पर चल पड़ो, ऑलराइट? यहाँ पर आपको बहुत कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आती है, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन आती है, आप उससे निकल लोगे, आप उससे निपट लोगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी राइट पर्सन ने, जब किसी करेक्ट पर्सन ने आपकी लाइफ में परमानेंट होना होगा, वो हो जाएंगे। बट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि भाई मुझे अभी ही मैरिज करनी है, अभी रिश्ता, तो ये जिद नहीं करनी, ऑलराइट? आपको अपने पार्टनर आपके राइट समय पर मिल जाएंगे, ये बात याद रखनी है। और जो मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है यहाँ पर, तो मैरिड लाइफ इज गोना बी वेयर यू आर गोना बैलेंस थिंग्स आउट विद योर पार्टनर। आपको जो है बैलेंस करनी पड़ेगी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ। कई बार काम, वर्कलोड ज़्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम यू आर गोना से दैट लेट्स हैव अ वेकेशन, और लेट्स हैव अ स्टेकेशन, और लेट्स जस्ट स्टे एट होम एंड बी टुगेदर। लेट्स हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स, लेट्स हैव कंपनी ऑफ ईच अदर, यू नो। या पूरा ही दिन नहीं तो कुछ टाइम अपने पार्टनर के साथ आप ज़रूर निकालने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आप 2 लोग होंगे और दोनों में समझ भी है इस बात की कि देखो, एक मैरिज वर्क करने के लिए या कराने के लिए, वर्क कराने के लिए दोनों को समय देना ज़रूरी है, दोनों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एक दूसरे को, अच्छाई बुराई को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एक दूसरे को, तभी मैरिज चलेगी। दोनों में ये इंटेलिजेंस है,
दोनों में विजडम है। तो आप और आपके पार्टनर काफ़ी समझदार लोग होने वाले हो। द ओनली गाइडेंस हेयर इज दैट डोंट बी सो पर्टिकुलर, डोंट हैव लाइक दिस विजन और लाइक भाई ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना। ऑल राइट, ऑफकोर्स ये तो पता होना चाहिए इंसान को कि मुझे कैसा पर्सन चाहिए, बट बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में मत जाओ, बिकॉज फिर बहुत डिटेल में चले जाते हैं, फिर हमें मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज पार्टनर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है मोर। सो दिस इज कमिंग टू मी, पाइल नंबर 2, you guys are coming to me as as an arranged marriage situation, and yeah, this is an arranged marriage situation because यहाँ प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन दो मैनिफेस्टेशन है, एक फेमिनिन एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, बट अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी इज हेयर दैट हे आई वांट अ स्पाउस जो मतलब मेरे को समझ पाए, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जो है कम करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट योर पर्सन एंड दे आर राइट नाउ रियली एग्जिस्टिंग इन योर ड्रीम लैंड ओनली। सो इफ़ यू वॉन्ट to get married and want a real spouse, want a real person in your life, then lower your expectation. All right, don't be so judgmental, don't do that. So इसकी यहाँ पर आपके लिए मतलब एक strong indication आ रही है। All right, pile number 2. So yeah, this was it, this was the reading for you all, and I really feel that you can get connected to pile number 1 as well. I feel that some messages are there for you. I feel this thing. And you know what? Internally you guys want a rom-com. Externally मतलब मुंह से आप ये कह सकते हो कि मुझे ये qualities चाहिए, but internally it's all about that love. No one will know that you want to experience love. People can say, pile number 2, that you pile number 2, आपके बारे में बात कर रही हूँ कि आपको लोग कह सकते हैं कि आप बहुत practical हो और yes, you're very practical, but internally people will not know that you want to experience love, because यहाँ पर भी जैसे ये फ्लोरल कलर जो है पिंक, जैसे पिंक कलर है, बड़ा एक फेमिनिन कलर है, फेमिनिन है, और यहाँ पर भी कार्ड भी थोड़ा फेमिनिन है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएशन का कार्ड है। तो यहाँ पर इंटरनल जो यहाँ पर एनर्जीज हैं आपकी वो यही है दैट आई वांट अ रोम-कॉम। असल में बात ये है, असल में ये बात है, आप उसे मैनिपुलेट मत करो वाया योर वर्ड्स, डोंट डू दैट। लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंटुइशन, व्हाट इज योर इनर सेल्फ सेइंग यू व्हेन यू मीट अ सूटर फॉर योरसेल्फ, आई मीन व्हेन यू मीट द पर्सन इन एन अरेंज मैरिज। जस्ट लिसन टू व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर गेटिंग, उस पर ध्यान दो, अपनी इंटुइशन पर ध्यान दो, और ऑफकोर्स दूसरे पर्सन पर भी ध्यान दो जो कि आप दोगे, बिकॉज यू हैव द जजमेंट कार्ड हियर, यू आर गोना जज दैट पर्सन, बट मे बी आफ्टर दैट पर्सन गोज अवे, मतलब गोज टू देयर हाउस एंड यू आर इन योर होम एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन जो ये रिश्ता आया था, तो सोचो, विचार करो कि आपकी क्या गट फीलिंग कह रही है, क्या आपकी इंटुइशन कह रही है। असल में आपकी नीड रोम-कॉम वाली है, you want to experience love. Externally you're like, no, I want a practical spouse, I want a practical person, I want a right partner, they should have this qualities, high expectation. Asal mein internally you want to experience love. In simple terms, you want a movie kind of romance, you want to experience love. So this is something which I'm also getting for you. That's why you're also manifesting. और जो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए पार्टनर, शायद ये आप किसी को बता भी नहीं रहे दैट आई एम मैनिफेस्टिंग राइट पार्टनर फॉर माई सेल्फ, और people feel that you are very practical and that's why you don't believe in manifestation, but they don't know that you also do manifestation, whether it's about career or about the right partner, but you do manifestations for sure, but people won't know this thing about you. You may say that astrology is nothing, tarot is nothing, but internally you feel that nahi, kuch to power hai, and you believe in this thing. That's why you're also watching this reading, but no one will know that you listen to these reading, you understand astrology, or you have this trust on astrology or tarot. People won't know about this. You may say bad things about tarot or astrology in front of other people to
have this image in front of them that hey, I am very practical. Again, यहाँ पर judgment का card है, तो you want other people to judge you in the way you want them to judge you. So you guys are something else only, alright? I'm not blaming or something, but I'm getting these messages from the spirit, so I'm just telling you that I'm just a mediator, nothing else. So yeah, this is it. This is something which I'm getting for you guys, and do let me know in the comment section what do you think about your reading, alright? And do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because when you guys subscribe, I get motivated. I feel like, yeah, you guys are understanding what I'm trying to say. You relate with it. And yeah. So if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the orange crystal stone here, and yeah, let's just get started with your reading here. यहाँ पर क्या messages है, क्या information है आपकी marriage से related? मतलब यहाँ पर आपकी arranged marriage है, love. Okay, already we have. Okay, we have Emperor. This card also came in the pile number 1. Goodness. अपने आप ही. Okay, I see Temperance. All right. बहुत strong energies है pile number 3 आपकी, बहुत ज़्यादा strong. Somehow you guys really want to get married, or you really want to get in a relationship, or you're really finding the right person for you in your life. Okay, I feel that with the Emperor card here, you guys are on this mission of getting married. Mission on finding the right person in your life. You have goals. You have a deadline as well, that hey, before 25 I want to get married, or before 30 I want to get married, or before 35 I want to get married. बहुत डिले हो गया, बहुत लेट हो गया है, या जैसा मैंने सोचा था, जिस टाइम पर मेरी मैरिज होनी चाहिए थी वैसा अभी हो नहीं रहा है. Something of that sort is happening. You have a timeline for everything, a deadline for everything. So remove this thing. All right, pile number 3. एक deadline आपने रखी हुई है. It's not job, it's not career, it's not business. It is a relationship. It is about love, romance, respect for each other, commitment, dutifulness towards each other. So you need to let go of that deadline which you have in your mindset or in your mind. You need to remove this thing. Not everyone is destined to get married before 25. Not everyone should get married before 28. कुछ लोगों के लिए सही है early marriage, कुछ के लिए नहीं है. Specifically the people who have Sun and Venus conjunction, they should, and even Sun or Mars conjunction, or Sun, Mars, Venus conjunction, because such people have ego battles with their partner, heated arguments with their partner early on, specifically before 28. So of course not everyone is destined for an early marriage, and you guys are too much into this timeline that hey, I want to get married before this. So stop doing that. All right, this is not good for you, not good for your mental health, not good for marriage, not good for the other person you get married to as well. And some of you guys have also planned that hey, at this age I want to get children, I want to have children. So some of you have really planned your life, which is a good thing. Of course, फ्यूचर के बारे में प्लान करना अच्छी बात तो है, मैं मना नहीं करूँगी इसके बारे में, बट बहुत हार्डकोर हो आप इन चीज़ों को लेकर. सो डोंट डू दिस. ऑल राइट, एंड आई फील दैट लॉयल्टी रियली मैटर्स टू यू, एंड प्लीज़ आई वुड से पाइल नंबर 1 से ज़रूर जो है, अगर इफ़ यू हैव टाइम ऑफ कोर्स, सी पाइल नंबर 1 एज वेल, बिकॉज यू कैन बी अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1 as well. So some of the messages can be there for you, so if you have time to do watch them. But yeah, with the Emperor card again, loyalty becomes very important for you, because we have a dog here. Dog is always loyal. It's the man's best friend, and you can have a dominating Ardra nakshatra as well. Ardra, it's yoni animal, it's a female dog, and you can have your sun, moon, rising, or the person you get married to, they can have a dominating Ardra nakshatra. Ardra occurs in Gemini, and I feel that you or your partner, somehow you guys are
or maybe both of you or one of you guys are not really open books. You will only trust your partner when you kind of do something for them, or yeah, I mean, ट्रस्ट जो है आपके लिए उस आपके पार्टनर के लिए एक दिन में भी बिल्ड हो सकता है या फिर कई सालों बाद बिल्ड हो, बट यू गाइज आर नॉट रियली ओपन बुक्स, दैट्स नॉट देयर. कई बार छोटी सी बात पर ही जो है आप इतना इम्प्रेस हो सकते हो दैट यू become very loyal to them or they become very loyal to you. But loyalty really matters to you guys. And some of you guys have also gone through relationship where a third party was involved and trust issues were there with your person in the past relationship, and you have right now also trust issues. You don't trust people easily now, and that can be a friendship or that can be a romantic relation, but you don't trust people easily, and you feel that there are very less people in the world who are loyal. But let me tell you this thing, let me remind you this thing, you already know this thing, that not everyone is the same, all right? So remember this thing. And of course deadline आपने रखी है कि इस टाइम पर मैरिज हो जानी चाहिए, इस टाइम पर children etc. Of course plan करना अच्छा है, but don't be so hardcore about that. And then I see the Temperance card, which gives me the message pile number 3, that you need to have a balance here, balance of practicality and emotions. Don't be so overly emotional and don't be so overly practical in relationship, marriage, because at times things don't go the way you want, and that brings sadness and melancholy. And don't do excess of any of these things. You really need to balance here, really need to balance this energy of yours. And I feel that this is going towards arranged marriage again. This may not really go towards love marriage, because I feel that there is some patriarchy going on here. And of course we are living in a patriarchal society. Yes, that's happening, that's there. I feel that there can be family pressure on you about marriage as well if you're in a marriageable age, but don't feel pressured again. When you get the right person, get married to them. But if you are not really getting the right person, then this is not the right time to get married. This is a message from the universe that, hey, you're not really destined right now to get married. And with the Temperance card again, I feel that because we have number 4 here and we have 14 here, so number 4 is kind of constant in your life. You can even see 444 or just single 4s kind of a lot of times. And number 4 represents care, love, nourishment, home, food, motherly nourishment as well. Somehow you want your spouse who can actually nourish you. You are looking for a person who is balanced, is kind of balanced, of course, with this Temperance card and with this Emperor. You want a spouse who can nourish you, and at the same time you want a spouse who is also very practical. So high expectation from marriage is also there, high expectation from your person is also there. But yes, you want, internally your soul wants a spouse who can nourish you emotionally, physically, mentally, spiritually. You want a partner who can emotionally nourish you, specifically emotionally nourish you. And there can be some issues with your parents. File number 3, you may feel that you were not nourished by your mother, or you may feel that your father didn't nourish you somehow. You feel lack of nourishment from your parents, or you may feel that your mindset does not matches your parents' mindset, and that's why you feel a lack of nourishment from them. You can even have Saturn and Moon conjunct shows. Saturn is practicality, coldness of life, or old opinionated personalities. Saturn represents this kind of nature, and Moon represents our mother. So your mother can be quite opinionated, kind of orthodox, kind of have this old belief systems, and you may feel that lack of nourishment with Saturn and Moon conjunction in your case, because I feel that Saturn is impacting your Moon, and you may also become more practical in your life because of your mother's teaching, because of your mother. Practicality is actually coming from the mother, but the lack of nourishment can be from both of your parents. You may feel a lack of nourishment from your parents. They don't understand. You have these kind of complaints from your parents,
I know this is a general reading, but I'm getting these messages from the spirit for you guys. Pile number 3. And yeah, there is this energy. But again, what I want to say here is that you guys need to slow down, okay? You need to slow down and look at the brighter side, okay? Look at, like, if you're like single and in a marriageable age, then try to focus on your career more. Try to focus on creative things more. And if like you are not in a marriageable age and you're trying to find a person for a relationship, the message is same for you. Try to focus on your career. Try to focus on some creative thing. Try to make yourself happy. You don't need anyone to complete you. You're complete on your own, all right? You don't need someone to complete you. Don't feel this way. Just marriage होनी होगी, पार्टनर मिलने होंगे, एक समय पर मिलना है उन्होंने आपसे, उस जैसे ही वो समय आता है वो आपको मिल जाएंगे. Don't worry about that. But this is an arranged marriage. File number 3. I'm getting this message. लव भी हो सकते हैं because this is a general reading, but more so यहाँ पर जो मुझे spirit से message मिल रहा है आपके लिए pile number 3, this is about arranged marriage. Arranged marriage ही यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी strongly वो भी. So some more information about your person. File number 3. Okay, I think this card wants to come out. I see release here. Of course, you have to release yourself with this bondage that hey, marriage is important. Marriage is important. And I also feel that some of your friends, cousins, they are getting married or they are already in a relationship, and that too a serious committed relationship, and you're like, oh my gosh, I'm gonna die single only. So this is also the energy. You need to release these kind of thoughts and these belief system, all right? You have to let go of the old belief systems. That's very important. You need to release yourself from this energy which you are stuck in right now. Then I see radiance here, summer solstice. All right, sun card आ गया, क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ऑप्टिमिज्म लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड ओके सो जैसे ये जो सन की शक्ल देख लो क्या बनी हुई है, लाइक या व्हाटएवर मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ तो ऐसी है. लाइक लुक एट द डिससैटिस्फाइड फेस. दिस कैन बी द फेस, मतलब ये चेहरा आपका भी हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, बट मोर सो बिकॉज ये आपने फाइल चूज करी है, आपकी रीडिंग है, तो आई फील दैट यू आर लुकिंग एट समवन, सम कपल, एंड यू आर लाइक या good for them. Like that energy is there. You're like why I don't have a relationship? Okay, if they have this relationship, good for them, whatever. It's that kind of energy also. You're kind of frustrated here for sure, and you can even get irritated when someone is talking about marriage in front of you. I'm sorry if I'm irritating you, but yeah, like you have this kind of a face here, internally or externally, you are in this kind of mood here. But I do see with this radiance card that hey, clarity is coming in your life about marriage, and ये एक तरह से you're also becoming more mature in terms of relationship and marriage. More maturity is coming, and somehow I feel, जैसा मैंने शुरू में भी इस रीडिंग के कहा था, that you can have sun and Venus conjunction, and यहाँ पर sun आ ही गया है. Venus is marriage. हम ये marriage के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं. Relationship को Venus represent करता है. Sun or Venus can be conjunct in your chart. It can happen. Or even if it's not true for you guys, astrologically, then I'm just getting these messages that you guys had heated arguments with the person you were in relationship before, ego battles with your person in a relationship if you were in relationship before. So there were heated arguments, ego battles with the person, and with Sun and Venus conjunction also makes you a very, very creative person, very dynamic, very much like a designer. You are a natural born designer if you have Sun and Venus conjunction, natural born designer. And yeah, there is this, you know, your energies about
marriage is like, it's kind of burnt. Like यहाँ पर जो है, I don't know how to express this thing. I cannot just express this right now. I feel जैसे मैं justice नहीं दे रही हूँ, जो spirit मुझे message दे रहा है with my words, I'm not giving justice. I feel that you are kind of burnt in maybe expectations of your parents about marriage, or you're just burned by relationships in general. It can be romantic relationships, it can be any friendship which kind of have already burnt you internally, emotionally, psychologically. And there's this frustration for sure, but you really need to release this frustration about relationship. And your maybe cousins, maybe your siblings or your parents can say that you have this anger inside you. People can say this about you, that pile number 3, you have a lot of anger, that's why आपके relationship, आपकी friendship टिकती नहीं है. And that really hurts you, that really burns you. So you definitely have a lot of pith inside you, but a lot of factors are working behind the scenes कि आप ऐसे क्यों हो. You have a reason for that. But when you get in relationship, when you get married, there is going to be a lot of passion for sure. That's there. There's going to be a lot of passion, and both will understand each other very nicely. Both will fulfill each other's wishes, desires. And I see a lot of financial abundance when you get married. Money coming in the household. Because you or your spouse got opportunities in career, that's why money is coming. Because हमारे पास यहाँ release card है, which is colored in green. Green represents the earth energies, Taurus, Virgo, Capricorn वाली energies. तो Taurus जो है joint assets को show करता है after marriage. तो वो यहाँ पर increase होते हुए नजर आ रहे हैं. Money यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है. Materialistic desires आप fulfill करते हुए नजर आ रहे हो एक दूसरे की. And of course we have the Emperor card here. तो यहाँ पर married life जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब financially बहुत ज़्यादा stable यहाँ पर नज़र आ रही है. But again, pile number 3, you are kind of burnt already in relationships, friendships. You guys can even have trust issues. And you may even feel जो लोग आपके साथ आते हैं फ्रेंडशिप में या फिर रिलेशनशिप में, उनकी वैल्यू सिस्टम आपकी वैल्यू सिस्टम से डिफरेंट है. जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हो, कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं. सो आई फील दैट ऑल्सो. Okay, I see transformation, of course. I feel that here, with marriage itself, you are also transforming yourself. Marriage is gonna be very transformative for you. You are like, जैसे ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की कई सारी स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं कौन कौन सी स्टेजेस हैं, बट चेंज की बात करती है बटरफ्लाई. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आफ्टर मैरिज ज़रूर आपके लिए आने वाला है, और ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपका नजर आ रहा है. यू कैन हैव अ स्कॉर्पियो राइजिंग इन द नवामशा. नवामशा रिप्रेजेंट्स आवर सेकेंड हाफ ऑफ आवर लाइफ आफ्टर मैरिज. इन दैट केस योर ascendant कैन बी इन योर sign of Scorpio. Sign of Scorpio shows transformations, ups and downs as well. So early in marriage you may feel that you have to adjust a lot with the person, and you may have to transform yourself a lot in marriage, but you're becoming a butterfly here. You're becoming someone who is very beautiful, who's very feminine in nature, who is very accepting, who is very creative, and you're releasing your old belief systems in marriage as well. So this transformation is for good only. देखो, बदलने में, चेंज लाने में जोर लगता है, मानते हैं इस बात को, हर कोई मानता है. कहने को बहुत ईजी है कि आपको बदलना चाहिए, change yourself. It's very easy to say, but when someone needs to change themselves, it is difficult for sure. So this transformation can be a bit difficult, but the transformation, the end result is very beautiful. So there is definite transformation for you, but the person you're becoming in the second half of your life, you're becoming very beautiful, very feminine, very creative, very dynamic, very loving, very caring, and patient भी आप काफ़ी यहाँ नज़र आ रहे हो. Marriage is bringing you this. I see prosperity. Of course, जैसा मैंने शुरू में ही, मतलब शुरू में तो क्या, यहाँ पर सन कार्ड एम्परर में कहा था that there is lot of money coming as well. Money is coming in your dwelling. Joint assets यहाँ पर increase होते हुए नज़र आ रहे हैं इस prosperity कार्ड से. तो ये चीज़ जो है
बिल्कुल ही क्लियर हो गया, इसकी इंट्यूशन स्पिरिट मैसेज दे रही थी। ऑरेकल नेवर रियली लाइज, सो ऑरेकल कार्ड ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया दैट देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी आफ्टर मैरिज फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन से मैरिज करो तो शायद ये पर्सन इतने भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर ना हो, बट when you get married to this person suddenly money will come in your dwelling, तो वो चीज़ होगी यहाँ पर। somehow your Venus or Jupiter can be placed in the nakshatra of Uttara, in Uttara Bhadrapada. Uttara Bhadrapada is a Lakshmi ruled nakshatra, so Lakshmi coming in your life, or the person you end up getting married to, they have their Venus or their Jupiter or the seventh lord in Uttara Bhadrapada, so money will definitely come इन द ड्वेलिंग। यहाँ पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट से, और भी क्या गाइडेंस, क्या इन्फॉर्मेशन है स्पिरिट से अबाउट मैरिज। ये अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, दिस इज काइंड ऑफ एन अरेंज मैरिज हेयर, एंड आई ऑल्सो फील विद दिस रिलीज कार्ड, जैसे यहाँ पर सन लाइट आ रही है, रेज आ रही है सन की, एट द सेम टाइम ये एक और मैसेज भी दे रहा है मुझे, जैसे बिजली का चमकना, राइट, बिजली चमकना। तो अगर बिजली चमकती है तो क्यों चमकती है कि बारिश होने वाली है, आसमान में अंधेरा होगा, बारिश के टाइम पर काले बादल आएंगे, राइट, तो और फिर बिजली वो चमकेगी, और थोड़ी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर बिजली गिरी। तो वही सिनेरियो यहाँ पर आपके साथ है। मे बी लाइक हियर you may go through some harsh lessons in life about relationships, but after that जब वो सब कुछ हो गया, लाइटनिंग होगी, बारिश होगी, तो क्लियर मौसम भी तो निकलेगा, सन अपनी रेडियंस दिखाएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, स्प्रिंग टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सो अगेन योर लाइफ पाइल नंबर 3 is kind of tough. It is not really for you, life is not hunky-dory. It is full of thorns as well for you, pile number 3. Life is not really beautiful for you till now. But when you get married, there are still transformations. But through those transformations, you're finding your higher purpose. You're becoming this emperor. And you're going to feel much more beautiful and stable in every way. Financial prosperity will come after marriage. But before all this, you're going to go through a lot of dark times as well. And I feel that you can have, again, in your chart, you can have Hasta Nakshatra dominating, which occurs in Virgo. Hasta Nakshatra से comedians निकल कर आते हैं. Hasta people are very witty. You can be very witty. You can be very, like, you can have a good humor. आप humor ढूंढोगे मुश्किल से मुश्किल situation में, pile number 3, in your life, even after marriage. सो एक कमेडियन का चार्ट बड़ा ग्लूमी होता है, ये मत सोचो कि बहुत बढ़िया होता है, नो, दे हैव सीन स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, दैट्स वाई जो भी उनके सामने आगे स्ट्रगल आती है, मुश्किलें आती है, वो उससे आराम से निकल जाते हैं और उस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक में ले जाते हैं हर चीज़ को, बिकॉज दे हैव सीन द डार्क टाइम, एंड यू ऑल्सो हैव सीन द डार्केस्ट टाइम्स इन योर लाइफ, एंड दैट टू यू विल सी बिफोर मैरिज, एंड आफ्टर मैरिज भी ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर टाइम है, बट यू आर बिकमिंग अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन आफ्टर मैरिज, सो डोंट वरी, ऑल राइट। I know this is not really a very happening energies here, but kind of heavy energies can be felt in this reading, pile number 3 for you guys. I see transformation. Again, we have transformation here. Fresh new way of living emerges. See, what is constant in life? Change. Change is always constant, and here as well we have the message of transformation. So you really need to let go of old belief system. जैसे शुरू में भी यही हम बात कर रहे थे कि आपको old belief systems को let go करने की ज़रूरत है। जैसा हुआ पास्ट में उसको पास्ट में रहने देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, अपने पर्सपेक्टिव में लेकर आओ, थॉट्स में लेकर आओ, लाइफ फिर बदलेगी, क्योंकि वट एवर यू थिंक इट बिकम्स, वट एवर यू थिंक यू गेट. So if you think about the dark and the bad times only, you're going to attract such people in your life then. But if you think positive, if you at least try to be positive, then things will be much better for you guys. Future will be much better. So एक जो है एक नया, लाइक यहाँ पर भी मैसेज है, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, यानी
एक नया लाइफस्टाइल जो है आपको अपनी लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है। नया लाइफस्टाइल जो कि पॉजिटिव अफर्मेशन से भरा हुआ हो, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना, नेगेटिव पर इतना ध्यान ना देना। ऑफकोर्स नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना उस पर भी ध्यान देना, बट अगेन अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करने का, मतलब चेंज करने की गाइडेंस है आपको। मतलब स्पिरिट ये चीज़ मैसेज देना चाहती है कि चेंज योर लाइफस्टाइल, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसे खाना जो है बॉडी की नीड है, खाना पीना ये बॉडी की नीड है, उसी तरह हमारी सोल की नीड जो है वो पॉजिटिविटी है। सो या ये 2 कार्ड आए हैं। आई सी द इम्पैसिव ब्रेकिंग ट्रेल। सो अगेन बिफोर दैट, आपकी सोल का खाना पॉजिटिविटी है, उसको खाना ज़रूर देना है जैसे आप अपनी बॉडी को खाना देते हो। यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। आई डोंट फील दैट दिस ब्रेक थ्रू इज अ नेगेटिव ब्रेक थ्रू। इट्स लाइक यूर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सराउंडिंग यू, all the people who are kind of have become toxic to you, moving away from them psychologically or physically. And yeah, you really need to again move forward in your life emotionally, psychologically, and even some of you guys have to move forward physically. यहाँ पर इम्पासी का कार्ड है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सो जैसे ही मैंने अभी इम्पासी टर्म पढ़ा, मेरे मन में जो मतलब स्पिरिट ने जो मैसेज डाला है वो ये डाला है कि some people in your life come and go, but if you start bothering about, or if you start thinking about those people who come and go, you're gonna go crazy. You're gonna go crazy. So some people in our life comes and goes, they're not permanent. We should let them go, let go of, मतलब उनके बारे में सोचना भी आपको कम करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स मैं अगर कह दूं कि इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दो, मन उस पर्सन के बारे में फिर ज़्यादा सोचेगा। सो क्या करना चाहिए कि कम सोचना चाहिए उस पर्सन के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में, उस फ्रेंडशिप के बारे में। अदरवाइज आप पास्ट में अटके रहोगे, नया पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जीज जो है यहाँ पर, यहाँ एनर्जीज है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज किसी पास्ट के पर्सन में अटकी हुई है, तो वहां से अपनी एनर्जी जो है कट कर दो, वहां पर अपनी एनर्जी नहीं लेके जाओ। रिफ्लेक्ट करो, रीडायरेक्ट करो अपनी एनर्जी एक न्यू पर्सन की तरफ, एक मैनिफेस्ट करो राइट पर्सन अपनी लाइफ में, मूव ऑन करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल मूवमेंट की ज़रूरत है। नॉट एवरी वन इज परमानेंट, सम पीपल जस्ट कम्स एंड गोज, एंड दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ। So I really feel that you guys are very soft people. Internally you are very soft. Externally you can be very hardcore. Internally you guys are very soft people. So yeah, this is the information I'm getting here for you guys. And I feel कि आप छोड़ते नहीं हो, कोई चीज़ को पकड़ लो या कोई हैबिट को पकड़ लो या किसी पर्सन को पकड़ लो, आप उस पर्सन को छोड़ते ही नहीं हो या उस हैबिट को छोड़ते ही नहीं हो। पकड़ा होता है आपने उसको कस के। लेट गो, अपने एनर्जीज जो है उस चीज़ से लेट गो करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली कुछ चेंज आपकी लाइफ में आएगा। सो या अगेन द होल पाइल, पाइल नंबर 3 आपके लिए जो है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, बट ओवरऑल लाइफ के लिए काफ़ी है, काफ़ी ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। मैरिज, ये अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। ट्रस्ट इश्यूज को हील करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर 2 बार मैसेज आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। इफ़ यू फील कि अभी भी मैं जो हूँ हर्ट हूँ और मैं हील नहीं हुई हूँ, तो यहाँ पर आप अपने आप को जल्दी ही हील करने वाले हो और जल्दी ही अपना माइंडसेट चेंज करने वाले हो। ये चीज़ नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, पर अच्छी है, सुंदर है। जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई हेयर, सुंदर है। And you will have a lot of depth, you will have a lot of wisdom in the second half of your life, because you have gone through so much BS in your life. So you really need to release all these things, all the bad experiences. Of course remember कि आपने क्या सीखा उस experience से, but
उस एक्सपीरियंस को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन, उस सिचुएशन को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीख को याद रखने की ज़रूरत है कि आपने उस सिचुएशन से क्या सीखा था. Alright, so this is the information coming for you guys, pile number 3, and yes, that was the reading for you all. And do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates, and do like this video reading, and please subscribe to this channel because when you guys subscribe I get motivated to do more and more and more for you. And yes, if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.